Hello everyone, this is the video on mock test number 2. So I hope you have solved mock test number 2 and these are the solutions to the questions present in the second mock test. All right, let's start. The first question is, officials are hopeful that the whole village dash by the time the hurricane dash. Now यहाँ पे officials are hopeful है, यानी कि officials प्रेजेंट टेंस में officials की स्टेट ऑफ माइंड की बात की जा रही है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। तो जब प्रेजेंट टेंस में बात की जा रही है यानी कि आई एम होपफुल माई रिजल्ट विल बी गुड, जब हम आज होपफुल है तो हम आज होपफुल तो आने वाले कल के लिए होंगे ना। सो दैट इज वाई ऑफिशियल्स आर होपफुल दैट द होल विलेज विल हैव बीन इवैक्यूएटेड बाय द टाइम द हरिकेन स्ट्राइक्स। ओके, जिस टाइम पे हरिकेन आएगा उस टाइम तक पूरा विलेज इवैक्यूएट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इवैक्यूएट? प्लीज लुक इनटू द वर्ड एंड फाइंड द मीनिंग। ओके, इवैक्यूएट का मतलब होता है कोई अगर फंसा हुआ है तो उसको वहां से निकालना। ओके, खाली करवाना किसी जगह को इवैक्यूएशन कहा जाता है। ओके, officials are hopeful that the whole village will have been evacuated by the time's hurricane strike. Okay, या तो इसमें आप सी चूज करते या डी चूज करते, बट अगर आप सी भी देखेंगे, यू नो, इफ यू गेट समटाइम्स कंफ्यूज्ड, then is striking will not be a right answer for the second blank. Okay, officials are hopeful that the whole village is going to evacuate by the time hurricane is striking. Okay, so that is not making sense. जैसे ही hurricane आएगा ऑफिशियल्स को उम्मीद है कि उस टाइम तक पूरा विलेज इवैक्यूएट हो चुका होगा। ओके, हो चुका होगा का जब सेंस आता है तो वी नो दैट, यू नो, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वी आर एक्सपेक्टिंग टू हैपन इन द फ्यूचर टेंस। ओके, सो डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन, choose the appropriate option to complete the sentence. You may have dash of the four watches. Either जब भी यूज होता है, either हमेशा यूज होता है as या तो आप एक चीज ले लीजिए या आप दूसरी चीज ले लीजिए, ठीक है। ईदर और ईदर यूजुअली हम यूज करते हैं फॉर टू चॉइसेस, टू चूज आउट ऑफ टू चॉइसेस। अब सम होगा नहीं, लिटिल होगा नहीं, बिकॉज फोर इज अ न्यूमेरिक क्वांटिटी, डेफिनेट क्वांटिटी है। सो एनी इज द राइट आंसर। ओके, एनी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। Okay, so you may have any of the four watches. Moving on, next question is assertion reason. When we talk about the past, we have to add an ed to the regular verb to make the past tense form. यानी कि study, studied. जब हम ed लगा देते हैं तो it becomes a past form. Okay, but second is irregular verbs are tricky and have their own set of rules, but most of the time you make it past tense by adding ed. Okay, जब हम first rule की बात कर रहे हैं तो first rule हर verb में fit नहीं हो रहा। अगर मेरे को लिखना हो go, तो go went gone बन जाता है, eat एट इटन बन जाता है, ठीक है, यहाँ पे ईडी वाला रूल फेल हो जाता है। लेकिन अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट, रीजन स्टेटमेंट की बात करूं, देन इट इज सेइंग कि सबके अपने रूल्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी मेक इट पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी, राइट। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो हैं हम उनमें ईडी ही लगाते हैं, जैसे स्टडी, स्टडीड। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स वी कैन डू, right? We have the study, studied, we have what else, hug, hugged. Okay, but not always we follow this rule, right? So that is why statement number 2 is the accurate, whereas statement assertion is not right. So A is not correct, but R is correct, is the right option, because this is not a universal statement, but it is the right statement. I have only fewer good shirts. अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, a few या fewer क्यों आया। देखो, few आता है अगर मुझे बोलना हो कि मेरे पास कुछ शर्ट्स हैं, so I have a few shirts, ठीक है। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, I have dash good shirts, ठीक है। तो जब मैं अपनी कलेक्शन में ही एक क्वालिटी की बात कर रही हूँ, तो मैं ये, मेरे पास अगर 50 शर्ट हैं, उसमें से अगर सिर्फ 10 शर्ट्स हैं जो अच्छी हैं, तो आई विल से कि
I have few shirts but fewer good shirts. Okay, so यहाँ पे I have only fewer good shirts. जब भी हम क्वालिटी बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, out of the lot we have, अब ओके वो यहाँ पे ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास बहुत कम शर्ट्स हैं जो अच्छी हैं. सो फ्यूअर इज द आंसर. ओके, next is match the list. Cheerful dance since beneath conjunction preposition verb adjective. Dance is a verb. बी का थ्री हमें सामने से साफ दिख गया. बी का थ्री किस में है? इसमें है और इसमें है. अब हम cheerful की बात करें. He is a cheerful person. तो चीयरफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. क्वालिटी बता रहा है कि कोई पर्सन कैसा है. सो ए का फोर बी का थ्री जिसमें दिख रहा है उसे टिक कर दीजिए. डी इज द राइट आंसर. सिंस इज अ कंजंक्शन, बीनीथ इज अ प्रीपोजिशन एंड द आंसर मैच्ड इट. ओके, सो आई जितना हमने कोर्स में कवर किया है, आई एम प्रिटी श्योर दैट यू वुड हैव बीन एबल टू मैच इट आउट. बट जब हमें एक आंसर से पूरा आंसर मिल रहा है, देन व्हाई वुड नॉट वी सेव टाइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. We have to choose the right option. The number of questions is, देखिए यहां पर number of questions is आएगा. okay? क्यों is? क्योंकि number जो है, the number is 10. ओके, नंबर जो है वो अपने आप में क्या है? सिंगुलर है. ठीक है, हम क्वेश्चंस को सब्जेक्ट नहीं मान रहे, हम नंबर को सब्जेक्ट मान रहे हैं. उसके हिसाब से वर्ब इज. एवरीवन डैश टू अंडरगो अ हेल्थ चेकअप. सबको एक हेल्थ चेकअप के लिए जाना है. एवरीवन हैज टू अंडरगो. ब्रेड एंड बटर इज माई स्टेपल ब्रेकफास्ट. हमने कंपाउंड सब्जेक्ट पढ़ा था, हम इस दोनों को साथ में ट्रीट करेंगे. ठीक है, ब्रेड बटर इज माई स्टेपल ब्रेकफास्ट. सो इज. जेन अलोंग विद हर सिबलिंग्स हैज कॉट द फ्लू. अब अगर ये होता जेन एंड हर सिबलिंग्स, तो यहाँ पे हैव आता. यहाँ पे क्या मतलब है? जेन अपने बहनों भाई बहनों के साथ खुद भी बीमार हो गई. ओके, उसको भी फ्लू आ गया. सो हैज, बिकॉज जेन इज द सिंगुलर सब्जेक्ट. सो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? इज हैज. डी ऑप्शन मैचेस एंड डी इज द राइट आंसर. क्लियर? Let's move on. Question number 7, very easy. You are taller than I am. कंपैरेटिव एडजेक्टिव है. ठीक है, हमने एडजेक्टिव्स की बात की थी, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. जब दो में कंपैरिजन हो रहा हो तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो है, वी हैव टू अप्लाई दैट. वेरी सिंपल, वेरी स्कोरिंग, टॉलर. Question number 8. The children thoroughly enjoyed at the picnic. The children thoroughly enjoyed themselves at the picnic. इसमें this second statement is correct. First is not correct. Thoroughly enjoyed themselves. Okay. हम कहते हैं ना, please suit yourself, please enjoy yourself. आप खुद से enjoy कर लीजिए. Okay. So this is बच्चों ने खुद से बहुत enjoy किया. Then second statement is correct. So second is correct. One is incorrect. Next, again, we have assertion reason. So assertion is simple present is the tense you use for any habitual action. जब हम tense पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि कोई भी चीज जो रूटीन में हो रही है, he goes to school every day, रूटीन है, हैबिट है, वहां पे हमारा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है. देन अ हेल्पिंग वर्ब इज देयर, सो वी नो who and when the sentence is talking about. In the present progressive पहले भी डिस्कस किया गया है, it is basically present continuous. The helping verb are present conjugations of to be मतलब कि ऐसा हो रहा है. Okay, so is, am, are the प्रेजेंट टेंस कॉन्जुगेशन ऑफ बीइंग. ओके, हम जब पैसिव में इसको चेंज करते हैं, हम इसको बीइंग में चेंज कर देते हैं. राइट? सो वो ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, बट ए और आर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. सो बी इज द राइट आंसर. बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट explanation of B. Okay, because they don't have any relation. First is about simple present, second is about continuous present. Reason explanation नहीं है ये एक दूसरे का. They are correct, but they are not related. Next is adjectives are the word which are used to describe nouns, to modify nouns, to connect clauses, to link other words and phrases. Okay. So it is to describe noun and to modify noun. Okay, not to link other words and phrases, क्योंकि अगर आप link करेंगे तो conjunction है. ठीक है, कनेक्ट करना और लिंक करना कंजंक्शन का काम है. सो ए एंड बी इज द राइट आंसर. ओके, डिस्क्राइब तो है ही, मॉडिफाई भी है. ओके, मूविंग ऑन.
ब्राजील, इसमें हमें जंबल सेंटेंस अरेंज करना है। ब्राजील्स Guaranis are an ancient tribe who live in the country's remote jungles, but that has not excluded them from being internet savvy. BDCA. D is the right answer. Okay. नाउ हम यहाँ पे आई नो कि वर्ब ही आएगा नेक्स्ट। ब्राजील्स गुआरानीज एक्सक्लूडेड देम इज रॉन्ग। मैं इस सेंटेंस के पास जाऊंगी, मुझे मिल गया स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, देन आई विल फॉलो अप विद द ऑप्शन एंड आई विल टेक ऑप्शन नंबर डी। Question number 12. Okay. Now these questions, this mock test is having a few questions from collective noun. Okay. So the first is choose the correct noun from below. Choose the correct noun from below to be used for collective noun given sheaf of. Okay, so sheaf of हम use करते हैं for wheat और grain, अनाज के लिए हम ये word use करते हैं, ठीक है। sheaf, grain, आपका corn, इन सब चीजों के लिए sheaf word use किया जाता है। So A is the right answer, not C. A is the right answer. Okay, sheaf of wheat, green or grain or corns. Okay. The next is also a similar meaning. We have bivy of roebucks, storks, turkeys. We call it bivy of doves. Bivy of doves जो है, it is the right form. Okay, doves का bivy होता है, group of doves को bivy बोला जाता है, ठीक है। Then next is choose the correct word that defines the quality referred to in the question. Basically आपको ये टॉक ग्लिप टॉकर का मीनिंग क्या है वो बताना है, ठीक है, क्या क्वालिटी है। ग्लिप टॉकर इज somebody who is a very sweet, a very smooth talker, जिसकी बात एकदम से फ्लुएंटली समझ आ जाए। ओके, फ्लुएंटली समझ आ जाए लेकिन यू नो नॉन कन्विंसिंग हो। सो somebody who talks smooth. Okay, that is D. नेक्स्ट इज टेल डैश इज वेटिंग टू कम इन। जो भी इंतजार कर रहा है उसे बोलो अंदर आ जाए। टेल whoever is waiting to come in. Okay, now we have this word. All right, identify the two words that are closest to the meaning of the word in the question. So the word is charlatan. Charlatan का meaning होता है कि you know जो सेल्फ डिक्लेयर्ड, सेल्फ प्रोक्लेम्ड आर्टिस्ट होते हैं, कौन आर्टिस्ट होते हैं जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, उनको हम बोलते हैं शार्लेटन। ओके, सो माउंटेबैक एंड ट्रिक्स्टर इज द राइट आंसर टू इट। सो सी एंड डी। मतलब जो लोगों को जो होता है ना कि समटाइम पीपल बोस्ट ऑफ देयर ओन क्वालिटीज व्हेन दे डोंट हैव क्वालिटीज, जब वो अपने आप को बोस्ट करते हैं दैट दे हैव दीज क्वालिटीज, उनको हम बोलते हैं दैट पर्सन इज अ शार्लेटन। Charlatan. Okay, the synonym is mountebank and trickster. Okay, because they are tricking you out. So C and D is the right answer. Clear? Now let's move on to the another word. So choose the correct word that defines the quality referred to in the question. Okay, we have repulsive personality. So what do you understand by repulsive personality? Repulsive personality, it's a personality, which you cannot really like, which don't like, जिससे आप attract नहीं हो सकते, ठीक है? It's like basically you don't like the other person. अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा, so you may call that, the person is repulsive. I don't like the person, I repel. So there are two terms. One is, just a moment. Yeah. वन इज अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का ऑपोजिट होता है रिपेल, ठीक है। So, आप रिपेल उसे करेंगे जो आपको पसंद नहीं आएगा, एंड पसंद जो नहीं आ रहा, डिस्गस्टिंग। ओके, नेक्स्ट इज, या ओके, वी डिड दिस क्वेश्चन, रिपल्सिव पर्सनालिटी। ओके, नेक्स्ट इज अगेन कलेक्टिव नाउन। सो वी हैव टू डू कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ
colony of beavers. Okay, beavers is the right answer. हम colony usually use करते हैं to, yes, we usually use colony word to determine a group of ants, a group of insects, etc., etc. Okay, so in this option we have colony of beavers, colony of bacteria, etc. बीवर्स के लिए भी कॉलोनी यूज हो सकता है एंड बैक्टीरिया के लिए भी कॉलोनी यूज हो सकता है. ओके, बट द मोस्ट करेक्ट इज, in my opinion, it is a colony of bacteria. You should stick to 18th. For 18, colony of bacteria is the right answer. Okay, because colony is a group of people who, group of object, group of substance, you know, who stick, who resembles to a similar set of characteristics. So bacteria, colony of bacteria is the correct answer. Okay, colony can be of another objects also. It can be of ants, it can be of insects, you know. So beaver can also be right answer because beaver is a rodent, it is an animal, but colony of bacteria is more appropriate. Okay, now next is, choose the correct option, choose the correct word that defines the quality referred to in the question. Okay, the question is an intrepid fighter for human rights. Okay, so intrepid fighter for intrepid का meaning basically क्या होता है, जिसको कोई भी डरा ना सके. He is fearless, he is not, he is brave, he is not afraid of dangerous situation. So fearless is the right answer. Intrepid का synonym है fearless. Then the next one is identify the two words, identify the two words that are closest to the meaning of the given word in the question. The word is ricochet. Ricochet का meaning होता है जब, you know, there, जब आप एक ऑब्जेक्ट ऐसे थ्रो करते हैं और वो वापस आपकी तरफ आ जाता है. ठीक है, दैट इज नोन एज रिकोशे. ऑलराइट, सो रिबाउंड आप इसको कह सकते हैं, यू नो, समथिंग दैट goes and rebounds back to you. एंड आप इसको बूमरैंग भी कह सकते हैं. ठीक है, क्योंकि बूमरैंग क्या होता है, आपने भेजा और वापस आ गया. हम लोग इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं ना, सेम चीज रिपीट होती रहती है. सो बूमरैंग एंड रिबाउंड आर द राइट ऑप्शंस. ओके, बी एंड सी. All right, so we are done with the mock test 3, mock test 2 video. I hope you have solved it and most of you are scoring good. All right, and should you have any doubts, please feel free to reach out. Thank you everyone, and wish you very, very all the best for your upcoming exams.